Hello everyone, I am your Vishal Chavla. Back again with our next topic of class 10th, light. Today we will start with our next chapter, very interesting chapter, light. So, light, class 10th, chapter 10th. So firstly, what is light? लाइट क्या है तो आज जानेंगे लाइट क्या है. तो लाइट इज अ थिंग और अ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड. सो लाइट, हाउ लाइट हेल्प्स टू सी द वर्ल्ड. हाँ जी, तो लाइट हमारी कैसे हेल्प करती है किसी चीज को देखने के लिए. सो फर्स्टली रिफ्लेक्शन. When light falls on any object, suppose here is any object, light comes from any source, suppose sun, it reflects with an object and fall in our eyes. So here it is a man. So this object is seen with the help of reflection when light reflects and the image is formed in our eyes. So everything is watched or see with the help of light when light reflect on any object and after reflection the image is formed in our eyes. So क्या कह रहे हैं हम कि लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है और वो हमारी आईज पे जाके क्या बनती है, उसकी रेटिना पे इमेज बनती है. और लाइट क्या करती है, हेल्प करती है किसी भी चीज को देखने के लिए. उसके सरफेस पे जब लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है. तो आज हम बात करेंगे हमारी लाइट के साथ. तो लाइट एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हेल्प करती है हमें देखने के लिए किसी भी चीज को विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन. So the first thing is reflection. So what is reflection? When a light bounces back, strike with any smooth surface is called reflection. So रिफ्लेक्शन क्या है? जब कोई लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर, here is a mirror, light comes and after strike it will reflect in certain path is called reflection. So this ray is called incident ray. जो हमारी स्टार्टिंग रे है, जो इसके ऊपर क्या कर रही है, मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. एंड दिस रे जो आफ्टर स्ट्राइक जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. एंड हियर इट इज नॉर्मल. Angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and angle between refracted ray and normal is called angle of reflection. Here are two laws of reflection we discuss then. Now the next topic is laws of reflection. So simply here is any smooth surface like plane mirror, incident ray, reflected ray. Here is normal, incident ray. That ray which is fallen on the smooth surface is called incident ray, and that ray reflected back with after striking off smooth surface is called reflected ray. So first law, angle of incidence, angle of
incidence is equals to angle of reflection. So first law is angle of incidence is equals to angle of reflection. Means to say both the angles are equal. Means to say जिस एंगल के साथ इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है. सो फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection. So the second law is the normal incident ray, normal incident ray and reflected ray or so the second law is that normal ray, reflected ray and incident ray all lie in same plane. What's the meaning of same plane? We have three planes x, y, y, z और z x. So ये तीनों जो रेज है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी, या तो एक्स वाई में करते हैं, या एक्स जेड में और या वाई जेड में. सो द सेकेंड लॉ इज नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. So there is the two laws of reflection. So reflection has two types. Regular reflection, first type is. So what is the meaning of regular reflection? When two or three incident or falling parallel to each other, after reflection it will be parallel, after reflection it will be again parallel. So this reflection is called regular reflection. हाँ जी, जब कोई दो या तीन रेज, जो दो या दो से ज्यादा रेज इंसिडेंट करती हैं पैरेलली, and after reflection it also forms parallel position, so this reflection is called regular reflection. Regular reflection, this type of reflection is done by any smooth surface like plane mirror. So the next type is diffused reflection. Diffused reflection. So what is the meaning of diffused reflection? When a ray, here it is any diffuse surface, means to say any smooth surface नहीं है, ये कोई diffused surface है. A ray of light comes parallel, ray of light comes, two or three ray of light comes parallel to each other, but after reflection it doesn't parallel. It doesn't hold laws of reflection. In the regular reflection, it follows laws of reflection, but in diffused reflection, it doesn't follow laws of reflection. So this reflection is called diffused reflection. हाँ जी, इस रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही हम किसी भी बॉडी को देख सकते हैं. जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ फॉल करती है, जरूरी नहीं है वो कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ हो, वो क्या हो सकता है, रफ सरफेस हो सकता है, लाइक अ बॉल, लाइक अ चेयर, लाइक अ ह्यूमन बीइंग. सो व्हेन अ लाइट स्ट्राइक विद एनी सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स एंड द इमेज फॉर्म्स इन आवर आई, सो दैट टाइम वी सी द ऑब्जेक्ट. सो दिस हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट. This type of reflection help us to see the object. So this is called diffuse reflection. These are the two types of reflection: regular reflection and diffuse reflection. हाँ जी. So the next is, अभी हमने बात की मिरर के बारे में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, देन स्टार्ट करेंगे हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स और स्फेरिकल मिरर के साथ. सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर? सो पहली बात कर चुके हैं हम, एनी स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे
reflected ray. So in the plane mirror, the image is always formed with type of virtual image. प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. ऑलवेज इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज. हम डेली रूटीन में मिरर देखते हैं, प्लेन मिरर देखते हैं, तो हमें अपना साइज बड़ा छोटा तो नहीं दिखता. हमें क्या दिखता है, हमारा साइज बिल्कुल ही सेम साइज दिखता है. तो जो प्लेन मिरर है वो इमेज क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है. और ऑलवेज क्या होती है, वो सेम साइज होती है. इससे ना उसका साइज बड़ा होता है ना छोटा होता है. सो प्लेन मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज. सो फर्स्टली दो टाइप्स की इमेज होती है, रियल एंड वर्चुअल. सो व्हाट इज रियल इमेज? दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. रियल इमेज क्या है, दैट इमेज So real image क्या है, that image which is formed on the screen. जो इमेज स्क्रीन पे बनती है, स्क्रीन पे कब बनेगी, जब दो रेज आपस में मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद जब दो रेज मीट करेंगी तो उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, रियल इमेज. और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, दैट इमेज विच डज नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी. कब, जब दो रेज मीट करेंगी बट विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब मिरर के अराउंड मीट करेंगी, और बिहाइंड जब बियॉन्ड द मिरर मीट करेंगी, दैट टाइम द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. एंड द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड virtual image, and the other image is the concave mirror is formed real image. So this topic नो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. ठीक है जी. रियल इमेज क्या, कौन बनाता है, कनकेव बनाता है, कन्वेक्स बनाता है, कैसे बनाते हैं, वो हम अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. So the next topic is lateral inversion. Lateral inversion. So what is this lateral inversion? Yes, हम डेली रूटीन में मिरर देखते हैं, प्लेन मिरर. तो क्या नोट करते हैं, जो प्लेन मिरर में हमारी राइट हैंड है, जो राइट साइड है लेफ्ट दिखती है, और लेफ्ट साइड है जो राइट दिखती है. तो इस लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन को जो चेंजेस होती है, लेफ्ट हमारा राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन. So what is lateral inversion? Lateral inversion is that inversion when we see the mirror, the right side is seen in the mirror is left, and left is seen in the right, or vice versa. This type of the combination of left right or this changes is called lateral inversion. इसको क्या बोलते हैं हम, lateral inversion बोलते हैं. Only lateral inversion मतलब हाफ इन्वर्ट होती है चीज. अगर फुली इन्वर्ट होएगा तो वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी. बट दिस फॉर्म में क्या होती है, राइट तो सेम साइड है बट इन्वर्ट हो जाती है. राइट हमारा लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हमारा राइट दिखता है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर प्लेन मिरर. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, spherical mirror. So what do you mean by spherical? नाम से ही पता लग रहा है spherical. So it is a shape in the shape of sphere. In the shape of sphere is called spherical mirror. Yes, हम डिस्कस कर रहे थे spherical mirrors. तो spherical mirror नेम से ही पता लग रहा है, it is a shape of the sphere. That mirrors is a shape of the sphere. Sphere की shape में जो mirrors होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, spherical mirror. So there are two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. So what is the difference between concave mirror and convex mirror? In convex mirror, the inward portion और इनवर्ड पोर्शन कह सकते हैं, और इसके इनवर्ड जो सेंटर के टुवार्ड्स होएगा,
वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, और आउटर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। मीन्स टू से इसके साथ रेज रिफ्लेक्ट करेंगे। मीन्स टू से द रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द मिरर इज आउटवर्ड टू द सेंटर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द मिरर इज इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टेड पोर्शन अंदर होएगा, अंदर की तरफ होएगा, सेंटर की तरफ होएगा, वो कनकेव मिरर है। जिसका बाहर की तरफ होएगा कन्वेक्स मिरर है। The best common example of concave mirror and convex mirror is spoon. The inward portion of the spoon is called concave mirror and the outer portion of the inward portion of the mirror is called concave mirror or outward portion of the spoon is called convex mirror. So this is the spherical mirrors of our mirror. So there are two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. तो अब हम कुछ स्मॉल टर्म्स की बातें करेंगे, स्मॉल डेफिनेशंस जो मिरर के साथ रिलेटेड है, स्फेरिकल मिरर के साथ। तो देखते हैं। So this is the concave mirror. So this is the concave mirror. The central point of the center point of reflecting surface. रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम कहते हैं पोल. इट इज डिनोटेड बाय P. सो द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, जो इसके साथ अगर हम इसको कंप्लीट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा स्फीयर बन जाएगा. और इसका जो सेंट्रल पॉइंट होएगा उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. The central point of the spherical mirror is called center of curvature. The next is, here is pole. A straight line passing through center of curvature and pole is called principal axis. So what is this? The straight line passing from center of curvature and pole is called principal axis. The next is distance between center of curvature and pole. So the distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. So this is the small definitions of related with spherical mirrors. The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. The next is when rays parallel to principal axis. When incident rays, कोई दो हमने incident ray ली, दोनों क्या है पैरेलल. When rays parallel to principal axis after reflection meet at a single point. When are two rays parallel to principal axis after reflection meet at a single point and this point is called principal focus. हम बोलते हैं ना फोकस करो, तो फोकस क्या है, जब दो रेज इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या करती है, मर्ज करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस. एट द लास्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. Distance between principal focus and pole of the mirror is called focal length. And the small relation is radius of curvature है जो always क्या होएगा, focal length का half होएगा. The radius of curvature is always half of the focal length. तो आज हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किया है लाइट की और मिरर्स के साथ. कल हम इसकी इमेज फॉर्मेशन, उसके रूल्स और जो आगे इसके टॉपिक्स होंगे उसके साथ डिस्कस करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.